Welcome students in session 2 of lesson 15 Freedom Struggle Before Mahatma Gandhi. Today's topic is Divide Policy of Divide and Rule मतलब बांटो और शासन करो. On 19th July 1905, the Viceroy Lord Curzon issued an order dividing the province of Bengal into two parts, East Bengal, now Bangladesh, and West Bengal. The reason given was that it was too big to govern, so it should be divided to be governed efficiently. But the real reason was something different. मतलब कि बंगाल को बांटा गया ये कहकर कि इतने बड़े मतलब क्षेत्र में शासन करना आसान नहीं है तो उसको बांटा जा रहा है, मगर इसका रीज़न दूसरा था. बट द रियल रीज़न वॉज समथिंग डिफरेंट. इट वॉज अ डिलिब्रेट अटेम्प्ट ऑफ sowing seeds of disunity between the Hindus and the Muslims, as Bengal was the center of nationalist movement. क्योंकि बंगाल जो है वहाँ वो नेशनलिस्ट मूवमेंट का एक सेंटर था. उस वजह से अंग्रेज़ चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम्स को अलग कर दिया जाए, जिससे कि उनकी एकता टूट जाए और वो कमज़ोर पड़ जाएं. टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस. टूवर्ड्स मतलब आज़ादी की ओर पहला हमारा जो मूवमेंट था वह था स्वदेशी मूवमेंट. स्वदेशी मूवमेंट started from the partition of Bengal 1905 and continued till 1908. Swadeshi means of its own country. So the Indians started using the product of their own country and boycotting the good manufactured by the Britishers. It was an economic strategy to remove British from power and improve the economic condition of Indians. The British could not stop their movement. Ultimately, they had to abolish the partition of Bengal. Now, towards independence. में दूसरा जो टॉपिक है दैट इज द गदर पार्टी. On 21st April 1913, Indians in San Francisco assembled and formed the Ghadar Party, that is also called Revolutionary Party. 1913 में 21 अप्रैल 1913 में सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वहाँ के जो थे वह इकट्ठे होकर उन्होंने एक पार्टी का निर्माण किया, वो गदर पार्टी कहलाई. द एम ऑफ दिस पार्टी वॉज टू गेट रिड ऑफ द ब्रिटिश रूल. माने उनका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश से भारत को आज़ादी. ऑन 1st November 1930, द गदर पार्टी started a weekly newspaper named Gadar, which was established in Punjabi, Hindi, Urdu, Bengali, Gujarati and Pashto languages. Kartar Singh Sarba did all the work for that weekly newspaper. This was a time when India was all set to launch a full-scale freedom struggle. However, the beginning of the First World War changed the world scenario. मतलब उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था और उसने पूरी दुनिया का एक सीन बदल दिया था. इंडियन एस्पिरेशन फॉर इंडिपेंडेंस took a back seat for the time being. Now students, this chapter is finished. All of you complete whole exercises of chapter in your book with the help of pencil. I will give you the question answers in your homework and also word meanings and summary. Thank you for watching the video. Bye.